19-year-old Suresh is a waste picker. A lack of healthcare, no access to protective gear, little knowledge about his rights has cost him dearly, not once but twice. The first time he had to drop out of school after his father's accident, and then in August last year, he lost his left eye when a splinter injured it while he was collecting waste. He belongs to the Kalbelia tribe. It isn't just Suresh. A large part of the Kalbelia tribe, a denotified, traditionally predominantly nomadic tribe from Rajasthan, is affected by little access or awareness about basic facilities like health care. This is their story. The population of the denotified tribes, the semi-nomadic and nomadic tribes, is approximately 10% of India's total population. But the uncertainty of their status has left them with little or no access about their rights and also awareness, which is the reason why we see this huge impact on the quality of their lives. When we talk about leaving no one behind and health for all, are these communities a part of it? Rajasthan, called the land of kings, has a rich history and a diverse culture. It is known for its palaces and forts, temples, legends and lore. From colorful and vibrant cities to remote desert villages, Rajasthan is also home to numerous tribal and nomadic communities. Unfortunately, the contribution of these tribes and smaller communities to Rajasthan's diversity and traditions is often overlooked. The acrobatic yet sensuous dance steps of the Kalbelia women as they perform the dance they are best known for, and the embroidered black outfits have continued to entertain people for decades. However, beyond this, not many know about the Kalbelia community and its other traditions. The Kalbelias were snake handlers once. The word Kalbelia itself is a combination of the words Kal meaning snake and Belia meaning friend. The traditional occupation of the Kalbelia tribe has been catching snakes and trading their venom. But in 1972, this tribe faced an existential crisis after the Wildlife Protection Act was enforced. They moved away from their traditional livelihood as nomadic snake charmers to whatever work they could find. So because the dependency of the Kalbelias was on snakes, first of all, because they were snake charmers, so these were the sources of entertainment. So the community entertained people. So when Wildlife Act came in 1972, Wildlife Protection Act, so this was barred. They were barred from keeping these, so they have to give up their snakes. And there were no other option for them actually. The government came with a strict rule of Wildlife Act, but there were no other provisions made for such communities for their rehabilitation. So when this strict Forest Act came in 1980, they were again displaced. So 1972 Wildlife Act and 1980 Forest Act both have affected them badly, and now they are left to rag picking. They live in slums now because they have concentrated into slums, because in villages there is no option for them for any livelihood. The Kalbelia community is one of the most backward, deprived and neglected communities in India. Though tribal communities like the Kalbelias are culturally rich and play an invaluable role in preserving indigenous knowledge and old cultures and traditions, this has never been recognized and validated. Though they have been categorized as scheduled castes or SCs, scheduled tribes or STs, and other backward classes or OBCs, they get negligible benefits from this categorization. Later on, some of those communities were categorized differently. Like some came in SC, scheduled caste, some came in ST category, scheduled tribe, and some were listed as OBCs.
but there was no uniform study of these communities, actually, no anthropological study of these communities. So there are cases like still that the community is recognized differently. For example, the Kalbelias are Jogis. Now in Rajasthan, the Jogis are listed as OBC and the Kalbelias are listed as SC. It's the same community, it's not a different community, but the lack of study on these communities has categorized them differently, thus they have not been able to take proper benefits of the government policies. अभी तक पूरे राजस्थान में देखा जाए तो कालबेलिया समाज को ना तो पानी की सुविधा मिली है, ना रोड की सुविधा मिली है, कहीं कहीं पे है, और ना उनको आर्थिक सहायता मिली है। यहाँ तक कि जीते जी तो ज़मीन नहीं मिलती है, तो अब उनका रहने खाने पीने का कोई ठिकाना ही नहीं। यहाँ तक कि लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। The denotified tribes continue to live a marginalized life in the post-independence era. When we looked in the context of rural settlements and gender specificity, the situation is very dire. Ganga lost her leg in an accident at the age of 12. She has no means of earning a livelihood. She lives in a kacha home, a makeshift tent just outside the village of Dholkipati in Udaipur. बस्ती में जाते, कभी मम्मी चली जाती, कभी मैं चली जाती हूँ, बस ये लाते हैं खाते हैं। वह 5-6 किलो आटो ले आते हैं मैम, फिर दोनों माँ बेटे 5-6 दिन खाते, फिर ख़त्म हो जाते, फिर जाते, ये करते हैं। और काम तो कुछ होता भी नहीं है, मेरे से क्या काम होगा जो मैं वो करूँ। हाथों में बैसाखी रहती है, मम्मी इतनी वो हो गई, चलती है तो सांस चलने लग जाती है। Ganga lives with her 70-year-old mother. They are both waiting for a miracle to happen. और पेंशन 750 रुपये मेरे आते हैं और 500 रुपये मम्मी के आते हैं, उससे मेरे क्या होता है। Meanwhile, Suresh has no choice but to continue as a waste collector despite losing his eye 8 months ago. जैसे कि मैं पहले सप्लाई का काम करता था, कैंपर सप्लाई पानी में, तो मैं पानी सप्लाई पे गया था, 2 बजे घर पे छुट्टी करके आया था। मम्मी अकेले यहाँ पे परेशान हो रहे थे, मम्मी ने बोला मेरी हेल्प करवा दे, तो मैंने हेल्प करवाया। पूरा फाइनल हो गया था, छोटा सा रह गया था, जो मैं हथौड़ी फेंक ही रहता तो उसमें से पता नहीं एक छोटा सा टुकड़ा उड़ के मेरे आँख पर लग गया था, तो छेद पड़ गया था हल्का सा। उसके बाद मैंने सुबह काम पर गया, मेरे दर्द होने लगी, मम्मी को कॉल किया मैंने, मम्मी मेरे दर्द, छोटे भाई को हॉस्पिटल भेजो, मैं अस्पताल जाऊँगा। मम्मी ने छोटे भाई को भेजा, फिर मैं अस्पताल गया, डॉक्टर ने बताया तुम्हारे आँख में चीरा पड़ गया है। मेरे लेफ्ट आँख से कुछ भी नहीं दिखता है, फिर भी मैं काम करता हूँ क्योंकि मम्मी पापा के बिना मेरे सिवा कमाने वाला घर में कोई है ही नहीं, तो मेरे को कमा के मम्मी पापा को खिलाना ही है। Most people of the Kalbelia community just earn enough money to live on and nothing extra to save. Even after Suresh lost his eye, the family continues to work without any sort of protective gear, completely unaware that it exists and that using it will keep them relatively safer than they are now. लेकिन वो कैसे पहनते हैं, कैसे क्या करते हैं, समझ में आता ही नहीं है। कैसे समझेंगे, 24 से के लिए गर्मी लगता है, कभी गर्मी रहती है, कभी सर्दी रहती है, कभी क्या होता है, गीला हो जाएगा, क्या करेगा, तो उसको तो निकालने पड़ेगा, और आदत जो है ही नहीं वो चीज़ पहनने की। अभी तो दिक्कत क्या है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हम 2 माँ बेटे हैं, 1 लड़की है, उसकी शादी करनी है। अभी तो आदमी ऐसा है, पैसों की दिक्कत है, घर में खान पीन की हर चीज़ की सामान की, खाने पीने का सामान की दिक्कत है। 100-200 रुपया मैं कमा लेती हूँ, वो जाता है 100-200 वो लेके आता है कमा के। Health, a fundamental human right, is one of the major concerns among the denotified tribes. Basic healthcare services runs 24/7 health facilities in the rural interiors of southern Rajasthan, where the tribal populations are based. If I talk of the needs in terms of health, in the group, there is a huge need of infectious diseases. That's what we see in our clinics. So tuberculosis, malaria are at the top. So now even a person living in a far-off village knows about sugar and BP. This is new. We didn't have this 10-15 years ago. Then there is a huge burden of malnutrition. We see hundreds of children with severe malnutrition. We see a lot of people with severe anemia, with hemoglobin 2, 3, and we wonder how come they are surviving. Again, hundreds of people with silicosis, which they get through stone grinding. So that's another. So this is in terms of the health needs. Then if we talk of access, so these communities are much away from where the health facilities are.
Finally, then there are the socio-cultural barriers which are there, which are so deep-rooted. You talk of trust in health systems, you talk of how do the communities see women, how much do they rely on their beliefs, traditions. So I think all these together, they really put health of the tribal communities of the Kalbelias in a spot. पानी की गंदगी से बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर से, डेंगू से, इनसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, पापी बीमार होते हैं, दस्ता, उल्टी, मच्छर, गंदगी। यहाँ पे कुपोषण दिखता है, खाते तो है लेकिन जो पौष्टिक होता है वो नहीं खाते। जैसे गंदगी है तो अब ये खाना खा रहे हैं तो उसके ऊपर मक्खियाँ भी आकर बैठ रही है, गंदगी हो रही है, फिर भी और साफ़ सफाई रखते ही नहीं तो वो कीटाणु वापस जाते हैं, तो उनसे इनको मतलब उल्टी, दस्त ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आते हैं ना तो ये मतलब इतना ट्रस्ट मतलब यूँ नहीं करते, आए होंगे और टीके लगाने आए तो आधे तो यूँ डरते हैं बुखार आ जाएगा कहीं, तो मतलब हम दूसरी बात भी कहने आते हैं दवाई इसके बारे में, लेकिन तो भी यही सोचते टीका लगाएंगे बुखार आएगा, मेरा बच्चा पीड़ित होगा, तो इसलिए ये मतलब पास में आना भी यूँ नहीं कि आए तो टीका ही लगाएंगे इसके। और टीकों के लिए भी हमको मतलब इतना यूँ करना पड़ता है, इनको घर से पकड़ के ले जाकर इनको टीका लगवाना पड़ता है। Sapna has 3 children. 6-year-old Namesh, 3-year-old Bhavesh and Kundan, who is 8 months old. None of them have birth certificates and like most children of the community, none of them go to school. मेरे 3 बच्चे, तीनों के जन्म पत्री नहीं है। हाँ, स्कूल में एडमिशन नहीं होता उससे, जन्म पत्री मांगते, जहाँ कहीं भी जाते हैं वो आधार कार्ड बनवाने तो जन्म पत्री मांगते हैं। क्या बीमार होते रहते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, पापा लाते हैं, गंदगी हो तो यहाँ बहुत सारी मच्छर से होती है, गंदा पानी खा रहते हैं, वो कचरा घूमते रहते हैं ऐसे धूल से। हम कचरा भी नहीं जाते, घर पे रहते हैं, वो भूखे भी रहते हैं, आधे तो गंदगी भी रहती है, और उनका सही ध्यान रखने की कुछ भी तो चाहिए घर पे, पैसे नहीं होते तो हम काम धंधे पे चले जाते हैं। Because they are not literate people. Problem is this. They'll go कि मेरा नाम ये है. They'll go to the e-mitra. They'll tell कि मेरा ये नाम ये है. They'll get their documents made. Now if they have spelling errors, then what you'll do with that? There is no one in the community to make them aware of this. There are schemes available for you, but the community is unaware of their rights. According to a survey report done by NGO Bhasha, 44.1% of the Kalbelia community do not have birth certificates. That's the highest number in all of India. Not just birth certificates, they do not have even other important documents. And probably that's the reason why Vijay Nath has taken this upon him and he's helping people from his community to get their paperwork done. Also, no birth certificates and no important documentation leads to low literacy rates amongst the community. Vijay is one of the few educated members of the Kalbelia community and is working towards his dream of becoming a teacher. तो कुछ सालों से मतलब मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने का मौका दिया और मैं इतने बड़े परिवार में से इकलौता ही लड़का हूँ जो पढ़ाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अभी सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आधार कार्ड अभी भी नहीं है इस समय पे। मतलब लोगों के पास जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस आई वैसे वैसे मैंने लोगों के आधार कार्ड बनाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक मैसेज पहुंचाया कि भाई आप लोगों के जिनके डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके मतलब वो प्रोसेस बताता हूं और उसी के थ्रू वो डॉक्यूमेंट बना पाते हैं। पढ़ना तो मैडम ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो गार्जियंस हैं, वे भी इस मामले में थोड़े अवेयर नहीं हैं। बाकी मैंने स्वयं यहाँ पर 4 साल रेमेडी सेंटर चलाया है। गवर्नमेंट्स के स्कूल भी हैं, टीचर्स इनको अप्रोच करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी कुछ है, लेकिन जब तक सोशल अवेयर नहीं आएगी इनको स्वयं को, तब तक थोड़ा एजुकेशन से जुड़ पाना मुश्किल रहेगा मैडम। Tough life conditions and a lack of awareness about basic rights, such as healthcare, make life very difficult for the Kalbelias. When we come back from a break, we find out how it isn't just in life the Kalbelia tribe has had to face stigma and discrimination, even in death.
The Kalbelia dance is an important cultural marker for the tribe and for the state. In 2010, the Kalbelia folk songs and dances of Rajasthan were declared a part of the UNESCO Intangible Heritage List. Gulabo Sapera from Ajmer, perhaps the best known exponent of the traditional Kalbelia dance, has taken her art across the globe. But she was buried alive for 7 hours right after birth because a girl child was considered a curse. Gulabo's journey has been truly inspiring. Not only has she received a Padma Shri for keeping the Kalbelia dance alive, her achievements have also helped end female infanticide in the community. She now wants to pass on her legacy to students who will continue the tradition of the Kalbelia dance. इसके लिए तो ये करने के जैसे मेरे से स्टार्ट हुआ ये, और कालबेलिया डांस, और ये समाज की पहचान हुई। तो मैं नहीं चाहती कि डांस मेरे साथ ही मर जाए या फिर चला जाए या फिर ख़त्म हो जाए। वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि पूरी दुनिया में फैल गया है डांस, और पूरी लड़कियां कर रही, पूरे देश विदेश में सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने देश से अगर ये डांस जाता है हर एक फेस्टिवल में तो बहुत नाम होता है। अपने राजस्थान का भी नाम होता है और इंडिया का भी नाम होता है कि इंडिया से हम कालबेलिया डांस को बुलवाया और सपेरा डांस को बुलवाया और ये कलाकार करके जा रहे हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि आगे तक चलता रहे और इसके लिए और हमारी फोक आर्ट ये बची रहे। मेरा सपना ये कि मेरा स्कूल बने और उस स्कूल में डांस स्कूल बने, सपेरा स्कूल, जिससे मैं उन बच्चों को डांस भी सिखाना चाहती हूँ और उनको मैं पढ़ाई भी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। बगैर पढ़े उनको आज जो कलाकार परेशान हो रहे हैं, फोक कलाकार, सिर्फ पढ़ाई की वजह से। While the Kalbelias have made an impact with their singing and dancing, there are still many dancers like Ramodi who have to beg to make ends meet. इनका फादर शराब पीता था, तो उनका थोड़ा ऐसे पैसा लेना, किसी से कर्ज लेना। मैं कार्यक्रम करने जाती तो वापस आती तो मेरे को कर्जा मिलता, किसी का 10, किसी का 20। तो वह हालात ऐसे धीरे धीरे करने गए। दूत में आदमी ने शराब नहीं छोड़ा। उसके 3-4 साल बाद में उनके पेट में कैंसर की गांठें बन गई। तो नॉर्मल जैसे सरकारी हॉस्पिटल में दिखाना, प्राइवेट में थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार का ऐसे करके मैंने उनको दिखाती रही। तो धीरे धीरे हालात बिगड़ती गई। तो मेरा कार्यक्रम छूटते गए। मैं उन्हीं के चक्कर में लगी। बच्ची छोटी थी, एक घर बचा था, उसको मैं 1 लाख रुपए में किसी के पास गिरवे रख दिया। अगर मांगने नहीं जाऊं तो फिर खिलाऊं क्या इनको। ये झोला लेके निकलती हूँ, सुबह से शाम घूम के इनको खाने का लाती हूँ, आटा लाती हूँ, 4 रोटी घड़ लेते हैं, खा के सो जाते। Ramodi lives in the temple in Jaipur's Kalakar colony. Finding work for the community is never easy as they continue to face the stigma of being a criminal tribal that has its roots in the colonial era, when the British included the Kalbelias in the Criminal Tribes Act, designating them habitual criminals. The situation took a turn for the worse with the spread of COVID. मेरे लिए तो बहुत मुश्किल रहा है कि बचपन से मैंने दुख देखा है। जब से बड़ी हुई हूँ तब से मम्मी को मांगते हुए देखा है, पापा भी चले गए और बहुत मुश्किल होता है कि इन हालातों से गुजरना कि मम्मी मांगने जाती है, लोग पूछते हैं कि मम्मी मांगने जाती है तुम क्यों कुछ नहीं करते, तुम एक लड़की की जात तुम क्या कर सकती हो, ना मुझे पढ़ना आता ना लिखना आता है। तो उस समय हालात ऐसे थे कि ना तो पढ़ पाई ना कुछ मैं कर पाई। तो जब आज सोचती हूँ तो दुख होता है कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया और मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मम्मी जाती है मांगने, ठीक है, वो हमारा 2 वक्त का 1 वक्त का खाना ले आती है, हम खा लेते हैं, मिलता है तो सो जाते हैं, नहीं है तो फिर हम जैसा भी गुजारा है बस सोचते हैं कि कैसे भी करके ये सब ठीक हो जाए, बस यही चाहते हैं हम लोग। Once a nomadic tribe, the Kalbelias still do not have an address and no land holdings. Even the dead very often are deprived of a proper resting place. It's because of social stigma and discrimination that they're forbidden from using burial grounds. In fact, that is what has led to 8 members of Lalita's family being buried right next to her house.
इसमें मेरे पापा जी है, भैया है, दादाजी है और बाबा की लड़की है, लड़का है, एक ही परिवार है। इसमें थोड़ा थोड़ा डर लगता है, इतना जगह है नहीं, फिर क्या करें, इसलिए यहाँ पे देना पड़ा। यहाँ पे बहुत समाधि है, इसलिए हम घर नहीं बना सकते, थोड़ा डर लगता है अजीब सा, इसलिए कोई जगह ही नहीं मिल रही यहाँ पे घर कि नहीं बना सकते हम। Kishannath started his fight for his community at the age of 17. However, today, after 50 years, he feels he has not achieved a thing. सरकार ने इन कम्युनिटी को ज़मीन भी नहीं दी और ना रहने के लिए मकान दिया और ना मुख्यमंत्री राहत कोष से है या प्रधानमंत्री आवास योजना से है। वो लाभ मिले तो कैसे मिले? अभी मैं चयनित परिवार में हूँ या अन्य कोई और चयनित परिवार में है, लेकिन उनको पट्टा हो तभी वो सुविधा मिलेगी। अब पट्टा नहीं है। During the time we spent with the Kalbelia community, we've understood that there is a huge lack of awareness concerned with their rights, a lack of trust in dealing with those outside of the community, and the fear of uncertainty which prevents the Kalbelias from addressing their own issues. Can these challenges or can these gaps be filled?